Yes, there are some people who remember February for other important days besides Valentine's. The 28th of February, National Science Day. But do you know why we celebrate National Science Day? Well, today, a commerce student who flunked 11th is going to tell you exactly why we celebrate it. हंसने वाली क्या बात है? And also because my boss has asked me to do it. अबे appraisal का time है. In 1921, famous Indian physicist V Rahman was on a ship one day coming back from London when a question struck him. Why is the sea really blue? He wasn't convinced with the notion that it's blue because of the sky's color. So in March 1928, he published a theory that came to be known as Raman Scattering, aka Raman effect. Raman scattering is the change in the wavelength of light that occurs when a light beam is deflected by molecules. Basically, and this is called the Raman effect. भैया जी समझ में नहीं आया। अब Raman scattering को आप लोगों को simply explain करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है. So let's try something that works on similar grounds. इससे simple मैं explain नहीं कर सकता. You see an apple on a bright sunny day. It's red in color, right? But why? Well, the sun's light is made up of all the colors, and each color has a particular wavelength. You can see the different colors of sunlight when it passes through a prism. That's when light bends and separates into different colors. Something like what you see in a rainbow. Similarly, a red apple is made up of certain molecules that interact with the sun's light. Most of the apple's molecules absorb all the colors except red, which is reflected, and hence you see a red apple. Similarly, every object around you is made up of different molecules and reflects different wavelengths of light, and therefore you have different colored objects. Though the Raman effect isn't used to study colors, it's more extensively used in the field of spectroscopy to find structural fingerprints of different molecules. मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग कैसे दिखता है, कैसे शेप में है, साइज में, that's what it's used for. For this, V Rahman was awarded the Nobel Prize in 1930, becoming the first Asian to receive it. So to celebrate this discovery of the Raman effect, National Science Day is celebrated on the 28th of February. बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं आपको रामन इफेक्ट नहीं समझा सकता. समझ में आया तो ठीक है. I'm going. Bye. An effect. For today's webinar, we are invited our resource person Dr. Kaushal Jani sir. Sir is the assistant professor in Kadi Sarva Vishwavidyalaya Gandhinagar and research development specialist. Sir completed his PhD in computer science from Kadi Sarva Vishwavidyalaya University since December 2015. Kaushal Jani sir had created India's first driverless car, which was appreciated by the Chief Minister of Gujarat, Srimati Anandiben Patel, and Defence Officer of India. Sir is the youngest PhD holder in the field of AI. I requested sir to start our today's webinar of National Science Day. Okay, thank you so much, Harshita madam, for your nice introduction. And this is my honor to give presentation on this National Science Day. So आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्रेजेंटेशन में. मैं अपनी स्लाइड जो है वो शेयर करना चाहूँगा जिससे मैं आप लोगों को कुछ
अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो आज का दिन जैसे हमने वीडियो में देखा, ये सीवी रामन के बारे में सेलिब्रेट किया जाता है उनके नोबेल प्राइज के लिए। तो आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही अच्छा सा एक आर्टिकल आया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल हम लोग जो कोविड-19 की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उस दौरान भी हमें सर श्री वी रामन का एक जो रामन स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो यूजफुल हो रहा है। फिलहाल हम लोग कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि कोविड-19 की सिचुएशन है या नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। तो 90 साल पहले जो सीवी रामन जी ने अपने नोबेल प्राइज के लिए जो मिला था रामन स्पेक्ट्रोमीटर, उसका आज हम यूज कर रहे हैं कोरोना टेस्टिंग के लिए। सो वी फील प्राउड कि आज भी हम उनके जो दिए गए मार्गदर्शन है उनका उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है, हमारी जो थीम जो है वो है फ्यूचर ऑफ एसटीआई, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उसका इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। दोस्तों कोविड-19 की सिचुएशन ने बहुत कुछ एजुकेशन में बदलाव लाए हैं, हालांकि वो जरूरी भी थे, बट कहते हैं ना कि भाई किसी चीज से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो कोविड-19 की सिचुएशन के कारण आज हम जो ई लर्निंग, हम घर बैठे बैठे जो हमारी पढ़ाई जो है तकरीबन 1 साल होने को है हमारे कोविड सिचुएशन को, और फिर भी हम ना रुके ना झुके। तो आज भी हम लोग जिस तरीके से एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। पहले मैं आपसे कुछ कंपैरिजन करना चाहूंगा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम थी उसके बारे में। उससे पहले कुछ कंपेयर करते हैं टेक्नोलॉजी की ओर। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो है कुछ 100 सदी पहले, यानी 100 साल पहले, 1 सदी पहले फोन की कंडीशन और आज की हमारी फोन की कंडीशन। पहले हमारे जो फोन थे उसका यूज सिर्फ फोन करने के लिए यानी ऑडियो कॉलिंग के लिए पॉसिबल था, और आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है, शायद आप लोग उसी मोबाइल से मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना यूजफुल है। यानी आप सोचिए कि 100 साल पहले हमारी फोन की कंडीशन और आज की फोन की कंडीशन में कितना बदलाव है। साथ ही साथ हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हम पहले जो है वे यूज करते थे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है, और आज की हमारी गाड़ियां देखिए, शायद ये हम कह सकते हैं कि अब तो हम लोग विदाउट ड्राइवर कार लेके निकल सकते हैं। ऑटोनोमस कार का सेंचुरी का आगमन हो चुका है। तो सोचिए कि 100 साल के अंदर हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कितना बदलाव लाई है। और यदि हम बात करते हैं हमारे क्लासरूम की, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर दिख रहे हो वो हमारी क्लासरूम कंडीशन के बारे में दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि 100 साल पहले का जो क्लास थे आज भी कुछ ऐसा ही क्लास है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी भी यही है। यही चीज को कुछ और अच्छी तरीके से दिखाने के लिए मैं एक वीडियो की सहायता लेना चाहूंगा। आपको पता चले कि हम लोग हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करें या हम लोग उसको पास्ट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेट मी शो यू अ वीडियो। आपको आवाज आ रही है इसकी? इज इट ऑडिबल? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट दे दीजिए मुझे।
अभी ये सुनाई दे रहा है? No, sir. Just a minute. Sorry दोस्तों थोड़ा समय लग गया. Something is wrong. I think now it is audible. Right, sir. Okay. But what is it? There is a growing feeling today that something is wrong with our system of education. But what is it? Well, we send our children to school to prepare them for the real world, which is changing very, very fast. But our schools haven't changed much for hundreds of years. In fact, thought leaders from around the world agree that the current system of education was designed in the industrial age mainly to churn out factory workers. And this industrial age mentality of mass production and mass control still runs deep in schools. Industrial age values. We educate children by batches and govern their lives by ringing bells. All day long, students do nothing but follow instructions. Sit down. Take out your books. Turn to page 40. Solve problem number 3. Stop talking. At school, you're rewarded for doing exactly what you are told. These are industrial age values that were really important for factory workers. Their success depended on following instructions and doing exactly what they were told. But in today's world, how far can you get by simply following instructions? The modern world values people who can be creative, who can communicate their ideas, and collaborate with others. But our children don't get a chance to develop such skills in a system that's based on industrial age values. Lack of autonomy and control. At school, our children experience a complete lack of autonomy and control. Every minute of a child's life is tightly controlled by the system. But in today's world, if you're doing important work, then you're managing your own time. You're making your own decisions regarding what to do and when to do it. But life at school looks very different. The system is sending a dangerous message to our children that they are not in charge of their own lives. They just have to follow whatever is laid down instead of taking charge and making the most of their lives. Experts believe autonomy is incredibly important for children. It's no wonder then that our children are bored and demotivated by school. Can you imagine how you would feel if you were told exactly what to do for every minute of your life? Inauthentic learning. Most of the learning that happens in schools today is not authentic because it relies on memorization and rote learning. The system defines a generic set of knowledge that all children must know. And then, every few months, we measure how much has been retained by administering exams. We know that such learning is not authentic because most of it is gone the day after the exam. Learning can be much deeper and more authentic. It can be so much more than just memorization and retention. But that's the only thing we measure, and test scores are the only thing we value. This has created an extremely unhealthy culture for students, parents, and teachers. Children are going through endless hours of tuitions, staying up all night memorizing useless facts that they will forget very soon. No room for passions and interests. We have an extremely standardized system where each child must learn the same thing at the same time in the same way as everyone else. This doesn't respect the basic fact of being human, that each of us is unique and different in our own way. We all have different passions and interests. And the key to fulfillment in life is to find your passion.
But do the schools of today help our children find and develop their passion? There seems to be no room in the current education system for the most important questions in a child's life. What am I good at? What do I want to do in life? How do I fit into this world? The system doesn't seem to care. There are so many greatly talented people who failed in the traditional school system. Fortunately, they were able to overcome these failures, but not everyone can. We have no measure for how much talent, how much potential goes unrecognized in the current system. Differences in how we learn. Each of us is also different in how we learn, in how much time we take to learn something, and what tools and resources work best for us. But the system has no room for such differences. So, if you're a bit slow in learning something, you are considered a failure, when all you needed was a bit more time to catch up. Lecturing. In the current system, children are lectured for more than 5 hours a day. But there are a few big problems with lecturing. Sal Khan from Khan Academy calls lecturing a fundamentally dehumanizing experience. 30 kids with fingers on their lips, not allowed to interact with each other. Also, in any given classroom, different students are at different levels of understanding. Now, whatever the teacher does, there are bound to be students who are either bored because they are ahead or confused because they're behind. Because of the internet and digital media, our children have at their fingertips all the information in the world. Technology has made it possible for anyone to learn anything. But for fear of losing control, the system is not leveraging these incredible resources. Our system of education, which evolved in the industrial age, has become outdated and ineffective. If we want to prepare our children for the modern world, if we want learning to be effective and engaging, then there's no doubt that we need to fundamentally change our system of education. जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुछ इंडस्ट्री के अंदर कोई बड़ा सा प्रोडक्शन चल रहा है, इस वजह से हो रहा है। हम लोग मास प्रोडक्शन में स्टूडेंट को पास कर रहे हैं विदाउट उसकी एबिलिटी चेक किए, उसको क्या मिल रहा है उसको चेक किए बिना सभी के लिए एक ही मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं। उसको बुखार हो या ना हो, उसको बुखार की दवाई खिलाए जाते हैं हम लोग। अभी देखें कि जो हमारे चाहिए, अभी हमारी करंट ट्रेंड जो चल रही है वो है इंडस्ट्री 4.0। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो डिजाइन हुआ है वो था इंडस्ट्री 1.0 की तरह, जहाँ पे कन्वीनियंट बेल्ट के ऊपर लोग कैसे काम करेंगे, हमें क्या नीड थी इंडस्ट्री के साथ, उस टाइप से हम लोगों ने स्टूडेंट को प्रिपेयर किया था। अब जबकि इंडस्ट्री ही चेंज हो चुकी है, आज आप देखिए कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या हमें जॉब रेडी बनाती है कि नहीं बनाती है। फिलहाल हम लोगों के पास जो टाइम चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, इनोवेशन का टाइम है, तो हमें भी कुछ अलग सोचना पड़ेगा इसके लिए। और इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री 4.0। हमें इंडस्ट्री 4.0 के लिए क्या क्या आवश्यकता है। जैसे हम लोगों ने वीडियो में देखा कि हमें कुछ हटके सोचने की जरूरत है। हर एक स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, हमें वो कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। वही कैपेबिलिटी के ऊपर यदि वो ज्यादा फोकस करेगा तो आई एम श्योर कि वो अपने नेक्स्ट मुकाम जो है वहां तक पहुंच पाएगा। तो जो इंडस्ट्री 4.0 की जरूरत है, चलिए उसके बारे में कुछ सुनते हैं फ्रॉम द एक्सपर्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0। Today we're speaking to Ward Hadway, Greater Manchester fastest 50 speaker, Mo Isa, about how he's bringing local companies into the digital age with Info Group. Mo, a Northwest entrepreneur, says that Industry 4 technology such as artificial intelligence and machine learning can be effectively exploited by fast-growing companies. So Mo, can you tell me what Industry 4 is and why it's important to fast-growing
you, Daniel. So Industry 4 is the way in which the digital world impacts the physical world and improve the way we do things. So improve the way we live and the way that we communicate, the way we do business, and how that digital technology can actually make things better. Okay, great. And how can fast-growing companies get their people on board with Industry 4? I think fast-growing companies, the whole digital world is moving at such a pace that businesses that actually harness the technology that's available will continue in that trajectory to growth, where you can actually achieve a lot more in terms of your outcomes through the investment in digital technologies. Okay, and what does the work do, and roughly how long would it take a company? Industry 4 and technology itself is a journey, and it's a never-ending journey. You need to have a plan and you need to have a strategy, and therefore, according to what you want to achieve, you'll be able to make the investments and get the right people to help you do that. Absolutely agree. And what personal benefits have you seen in the Info Group team as opposed to using Industry 4? Info Group is really set up to help companies make that journey a reality. There's always that challenge of where do you start, and that's what we specialize in. There's always the challenge of accessibility to the technology, and that's what we bring. And there's also the challenge of where do you find the talent that can help you do that, and that's also part of our core business. So technology, talent, as well as capital, are three components that we can help companies. So जैसे आपने देखा कि इंडस्ट्री टैलेंट की ज़रूरत है हमें, और टैलेंट जो है वो हमें हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम से मिलना काफ़ी कुछ मुश्किल है. हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट है, वो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो. तो देखते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के बारे में हमने बात की, वैसे ही एक और फंडा है एजुकेशन 4.0. बात करते हैं एजुकेशन 4.0 के बारे में. उससे पहले देखते हैं कि आगे के एजुकेशन में क्या होता था. एजुकेशन 1.0 जो है वो था लेक्चर्स एंड मेमोराइजेशन. हम लेक्चर्स पढ़ते थे, उसको याद करते थे, रट्टा लगाते थे, और उसके बाद सेम चीज़ हम एग्जाम के अंदर लिखते थे. एजुकेशन 2.0 के अंदर हमने इंटरनेट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट की, जो फिलहाल हमने ड्यूरिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन हमने इसका यूज़ किया, जहाँ पे हम लोगों ने जैसे आप लोग अभी भी वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वही चीज़ हमने इंटरनेट बेस्ड लर्निंग से स्टार्ट की. एजुकेशन 3.0 जो था एजुकेशन प्रोसेसिंग एंड एजुकेशन, वहाँ पे हम लोगों को अपना खुद का नॉलेज जो है उसका प्रोसेस करके हमें आगे बढ़ना था. और अभी जैसे इंडस्ट्री 4.0 है, वैसे ही एजुकेशन 4.0 की भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमें चाहिए इनोवेटिव प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग और एजुकेशन लर्निंग फ्रॉम अ डिफरेंट वे. आज हमारे सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हम कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं. ना तो कोई रूम के लिमिटेशन है, ना तो कोई कंट्री की बॉर्डर हमें रोक सकती है. हम कहीं से भी कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं. आइए देखते हैं एजुकेशन 4.0 की क्या बात हो सकती है. A chalkboard, a desk, the homework, the books. The day begins and ends when the bells ring. For centuries now, this has defined what all of us think about school. We have come to believe that this is the one way that students will learn. And with that belief, we have taught all of our students in pretty much the exact same way. But the world has changed, and what it means to be ready to succeed in the future has also changed. That means our model of learning must change. It's happening now, and it needs to happen even more. In more places, for all students, especially for those for whom the current system isn't working. There is strong data that shows we need to rethink learning.
Like remodeling a house, we're not just adding a new coat of paint, we're updating the outdated parts and making it more modern and efficient, strengthening what works and fixing what doesn't. Gone are the days when some students can excel and others just get by. Our society needs all kids to excel at high levels. And to make this happen, we need to engage our students like never before. This is student-centered learning. It incorporates the student's skills and interests into the learning process, making the experience more personalized and involving the student in his or her own future. What makes this work? There are 4 key principles of student-centered learning. Number 1, learning is personalized. Personalized learning happens when teachers know students, have strong relationships with them, and can meet students where they are in their development. Number 2, learning is competency-based. Learning is about the information and skills a student has mastered, not just moving through a curriculum. In a competency-based system, students can proceed at their own pace in every subject, enabling teachers to respond to individual needs, interests, and challenges. Number 3, learning happens anytime, anywhere. Students will often make important discoveries about themselves and the world around them when they learn beyond the traditional school day and outside the traditional school walls. Learning doesn't start and stop when the bells ring. And number 4, the last key to student-centered learning is students take ownership. Don't make a decision about students without students. They play a direct role in their own success, actively engaging with the process to ensure the impact is lasting and meaningful. For student-centered learning to work, all 4 of these principles must work together. This is not an a la carte approach. It's reimagining education so it works for all students. The fact is, our world is changing. And with the latest in child development research, we know better than ever before how children and young adults learn. The facts are there, and they point to the need for a new system of learning designed around each student. And when the student becomes stronger and more focused, all of us will benefit from a new generation that is contributing to our communities and our world in so many ways. This is student-centered learning. So friends, जैसे हमने बोला कि we need central based learning. So हमें एक बदलाव लाने के लिए 4 प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग. आपके टीचर को, आपके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी. आपको फोकस करना पड़ेगा इंडिविजुअल आपके एबिलिटीज़ पे. हर एक स्टूडेंट जो है उसकी खुद की एक कैपेबिलिटी है, हर एक चीज़ आप कर सकते हैं, बट आपको फोकस ये करना है कि किस में आप बेस्ड है. थर्ड थिंग, हम जो डिसीजन लेते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा, उससे अच्छा है कि आप बच्चे से ही पूछ लीजिए कि वो क्या करना चाहता है. आज की ये इंटरनेट की दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जिससे बच्चा काम कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए जिसमें कुछ ऐसी एबिलिटीज होगी जो कोई नई टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं. सो आज के दिन में नेशनल साइंस डे के दिन पे मुझे एक मौका दिया गया जहाँ पे मैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में आपसे रूबरू हो पाऊँ. So thank you so much Science City to give me such a great time to communicate with the students and parents also, with the teacher also. अंत में जाते समय मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करना चाहूँगा कि ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी while sleeping, it's something that doesn't not let you sleep. तो ख्वाब जरूर देखें और ख्वाबों का पूरा करने का जज्बा भी रखें. So thank you so much. Over to you, Science City. Thank you so much, sir, to spend your valuable time with us. Thank you so much all the participants to join with us in this online webinar. Thank you so much, sir.